Hello everyone. Today discuss in solid waste management. The topic is problems in the application of composting facilities. Problems in the application of composting facilities. First one is the odor. Odor is the essential challenge to remove in the composting process because it can be removed, but it can be reduced by separating the different types of matter. Second one is the can be reduced by process design and biological order management. Reference of pathogens. It is the serious problem due to increase the temperature pathogens can kill to increase the growth of pathogens. The importance of temperature is compulsory. पैथोजेंस को डैमेज करने में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका, देन पैथोजन किल्स हो सकता है आपका. In this topic we can cover order. We have also discussed in environmental engineering one what is order, the presence of pathogens. All things are studied in the previous year. Now presence of heavy metals. Suppose heavy metals presence है, then heavy metals are also the problem. It can be removed. इसको हम लोग remove करते हैं. Now design and operational consideration of anaerobic composting. Anaerobic composting means in the absence of oxygen. Now, anaerobic processing, it is a two-stage process. If the first stage process, organic polymers are fermented into short chain volatile fatty acids. These acids are then converted into methane and carbon dioxide. जो volatile फैटी एसिड्स है एक कन्वर्ट होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में. इन दिस प्रोसेस the organic polymers fermentation process and acid conversion occur at the same time. That means organic polymers formation process and acid conversion occurs at same time पे fermentation और conversion होता है इस केस में. In the case of anaerobic, the main function of this process is the stabilization and generation of methane. मिथेन को हम लोग कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं और कैसे जनरेट करते हैं एनारोबिक कंपोस्टिंग में. बेसिक थिंग नाउ our basic thing of anaerobic composting in the absence of organic. Now, the anaerobic process occurs in the absence of oxygen. Flowing equation shows the decomposition of organic matter in the absence of oxygen. In this case, या एक कर सकते हो आप anaerobic process होता है in the absence of oxygen. The equation is written as OM plus AB equal to CH4 CO2 NH3 final product and heat. In this case also final product will be created and heat will be also created. So here OM is the organic matter, AB is the anaerobic bacteria. Organic matter and anaerobic bacteria दोनों जब आपस में उसका मैकेनिज्म हम लोग कंसीडर करेंगे तो which is equal to CH4 plus CO2 NH3 plus final product plus heat. Heat will be also generated in this case because of organic matter and anaerobic bacteria.
दोनों का सम हमने लिया है और which is the give the product CH4 CO2 NH3 final product and heat. Now first of all consider organic matter, then anaerobic process, and finally the compost. Before compost, in anaerobic process, water, CH4, CO2, NH3 and heat will be produced. So this diagram shows that, this mechanism shows that how can anaerobic process will be proceed. First of all consider organic matter, then anaerobic process, then compost. ऑर्गेनिक मैटर एंड कंपोस्ट के बीच में एनारोबिक प्रोसेस होगा. अब एनारोबिक प्रोसेस प्रोड्यूस क्या करेगा? CH4, CO2, NH3, water, heat, etc. So this diagram is very, very important, understanding the anaerobic process. Now, worming composting. Employment of the earthworms to break down the organic matter into the end product known as compost. जब भी हम कंपोस्टिंग करते हैं, जहां भी आप कंपोस्टिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हो, जो फाइनल मैटर, जो फाइनल रिजल्ट जो मिलता है आपको एंड प्रोडक्ट, दैट इज एन कंपोस्ट. दिस इज आल्सो नोन एज मैन्योर, बिकॉज कंपोस्ट एंड मैन्योर बोथ आर सेम. And then use the agriculture land, क्योंकि ये जो कंपोस्ट है वो फर्टिलाइजर का काम करेगा. जहां एग्रीकल्चर लैंड है वहां हम इसको यूज कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग. इन रूरल एरिया some NGO will be started composting, vermi composting, and also government will be give the various types of project on the composting. Because of in market we have purchased the manure who will be disturb the agriculture land. उसकी जो फर्टिलाइजर है उसको कम कर सकता है डे बाय डे. सो हम लोगों को वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहिए. और अच्छे जो एजुकेटेड फार्मर है वो 100% यूज करते हैं. कंपोस्ट जहां बना रहे हो उसके सराउंडिंग में आपको ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू गैस भी निकलेगा, जो गैस एयर को पॉल्यूट करेगा. जब एयर पॉल्यूट होगा तो फाइनली ह्यूमन भी पॉल्यूट होंगे. तो हमें ध्यान रखना है कहाँ पे हमें कंपोस्ट करना है. जो लैंड वेस्ट हो और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, उससे थोड़े दूर पे हो. क्योंकि यदि हम उसके सराउंडिंग में करते हैं तो हीट निकलेगा, गैस निकलेगा जो हमें डैमेज करेगा. तो बेसिक थिंग ऑफ दिस, the basic thing of this unit, problems in the application of composting facility. कंपोस्टिंग फैसिलिटीज में प्रॉब्लम हमें क्या क्या आता है उसको डिस्कस किया हमने. एंड आल्सो डिस्कस डिजाइन एंड ऑपरेशनल कंसिडरेशन ऑफ anaerobic composting. You always remember, design
and consideration, design and operational consideration of anaerobic composting in the absence of oxygen. This is the technical term and very important. Many types of exam will be conducted and question will be this type, which is the anaerobic composting. So when in the absence of oxygen, जो phenomena होगा, that is known as anaerobic composting. So basic thing is this unit we have discussed about anaerobic process, operational consideration, etc. We will discuss about. Okay, thank you.